Just, Shashi Tharoor, just rather than just as a lovely concept and it's beautiful to have include, is it important for a country to move ahead? Or do countries do as well whether they've got walls built between different communities? Or is it an important part of First let us listen and then we'll explain it later on. Progress? No, it's extremely important. In fact, you build a wall, somebody will build a tunnel. You build a wall, somebody will build a tunnel, or they'll find a way of breaking your wall. That's human nature. But more important than that, I think, is that for a society to function, all the parts of it have to feel relevant. They have to feel they have a stake. If you have people who've been left out for one reason or the other, whether it's disability, whether it's caste, whether it's because they're Adivasi, whether it's because of their religion or faith or the language they speak, or the color of their skin, depending on the society you're talking about. Well, it happens in India. Absolutely. Right. When people feel left out, they have no Fair and Lovely ads are banned on NDTV. Good. We lose a lot of money as a result, but we will not accept that kind of racism on our channel. Yeah, it looks like I'm the only one who didn't use it. Sorry? Sorry? It looks like I'm the only one who didn't use it. Well, look, I mean, the point is that so all of these things, all of these kinds of discrimination essentially put people in a position where they feel they don't belong. They don't have a stake in the future and success of the society because they won't share in it. And that's what's wrong, because the practical purpose of pluralism is to let everyone feel involved, everyone to be a stakeholder in your society, and everyone to feel they're invested in the future of that society. Right. The moment you marginalize, alienate, push people aside, two things happen. One, you lose people who can actually build up your future. But second, you also potentially breed a viper in your bosom. There is no question that it's often the alienated individuals in a society, the disaffected, the ones who feel left out, who are the ones who will turn against it, or at least give aid and succor to those who want to come and harm the society. Right. So in every respect, it's in the interests of any society to be as inclusive, as accommodative, as pluralism requires. There's a very major university in America, in California, that's doing a simulation study about building walls, walls that are built, and their simulation with artificial intelligence predicts a civil war in India in the next 5 to 10 years. Now, that could be all wrong, robots, and they don't understand India. But the importance, I think, what Shashi Tharoor is saying is that it's important for progress. Take, for example, any survey around the world. What do people know about India? Two things: Mahatma Gandhi and the Taj Mahal. Taj Mahal is a huge attraction for people from around the world to come, and now it's not in our tourist handbooks anymore. It's been excluded. Now, why? Those sort of examples, do you find inclusion and not building walls crucial for India? Taj Mahal is not in the tourism. The UP government has issued a tourist handbook that doesn't mention the Taj Mahal, because, as you know, their chief minister last month or 2 months ago made a statement saying Taj Mahal is not Indian culture. They have a particularly bigoted and narrow-minded view now, of what is he's Indian. Becoming political. I just want to rescue us all from that. No, it is… it doesn't matter who built it, whether you like the people who built it or not. If somebody builds something beautiful, we must have an unprejudiced eye to appreciate it. When Malvika repeatedly said disabled community, I want you to know, most of the society is disabled in their own ways. It's Disability, अगर हम लोग देखें, if you look at disability, disability is not only in hands. अगर हाथ टूट गया है या फिर पाँव टूट गया है, so disability is not limited to human body. The mind can be disabled in many different ways. See the violence going on. Okay, don't you feel that there is some form of mental disability there? Why one community is against the other? Why they have such a limited identity, right? So societies are really disabled in many different ways. not because you lost a hand or leg you become disabled. People are disabled. They tend to disable themselves in so many ways. So, definitely Taj Mahal is a beautiful gem in anybody's eye. You cannot exclude that from India. At the same time,
I also don't believe that you must say this is the only thing in India. If you come to India, Taj Mahal is the only place to see. No, of It's a course not. very narrow way of doing things. I think that's what has been done for a long time. And it's time to change that by projecting everything else. There's so many But other beautiful definitely things. you can't remove a beautiful gem If like there's so many Taj other Mahal. beautiful things, we shouldn't look at who built them, just that they are Yes. beautiful right now. Especially if somebody whom you don't like built something beautiful for you, you must enjoy it even more. But I worry a bit about you saying people you don't like. Is Huh? that… No, I'm saying if you don't like somebody and they build something beautiful for you, But are you talking isn't about there a double joy? But when you say somebody you don't like, you're not talking about a community. No, I'm Talk about I'm an not individual. I'm saying Yeah. if I mean, I did not know that Taj Mahal is pulled out of the tourism thing. I really did not know that. I'm saying the only reason why you may do such a thing is because you don't like someone who built it, because there is a history of invasion, there is cruelty, there are terrible truths of the past. Shashi has been… I'm yet to read the book, I have the book, but I've heard him speak here and there about all the things that have been done during the British era, which is very cruel. Absolutely. But if we go to UK now, we don't hate those people. Yes, they have done this to us, we should never forget it. We should never forget it. This has been done to us because this should not be done to us once again. But it does not mean today's generation of English people, we have to hate them. Correct. No, that's not it. So the If they same could goes… give us the Kohinoor back, that's the least you could have No, done. that is the… that same goes for Islamic invasions. They've done terrible things to us. But we don't have to forget it, we should not forget it. Because Also, we they should never… stayed and became us, Sadhguru. Huh? They stayed and became us. There were some invaders who came and looted and left. But for many of the people, such as the emperor who built the Taj Mahal, they are us. They are part of our soil, assimilated into our culture. Say, I want you to know, if there was no World War II, British also would have stayed. So that doesn't mean that happened because of their love for you. No, but Sadhguru, they sent everything from here back to England. Whereas these people, even whatever they looted, they spent here. No, There no. is a difference. That is because it's another time when there were no ships. Technical There were problem, was it? No, no. There were ships, there were ships. Transportation issues. And besides, they had a land route back home to the Fergana Valley. They didn't use it. That's not easy to go. But you say whether they did or not, one should not hate them now and should not build walls around See, them now. because- Is that your message? See, what I'm saying is, historically many ugly things have been done by different people. Quite right. Ugly things that have happened to us as a nation, we must remember. Ugly things we've done to ourselves also. That also is there, that's another aspect. Right. What others have done to us, we must remember, but we should not become bitter because this bitterness will destroy us. That's Why we should remember is so that we don't make the same mistakes and get into the same pit once again. That's very important for me. course. But at the same time, if today, let's say, UK spoke the same language that it spoke during the colonial era, definitely we will not accept them. Unfortunately, with certain groups of people, they're trying to speak the same language which was historically spoken way back. So this creates a whole lot of confrontation in the society. And this entire misuse of this for democratic purposes, when I say democratic purposes, because it's all a number game, so people are playing this game for last 70 years, so naturally you have kind of brought this little bit of fear in others. Fear means people are saying what's happening in Iraq and the Islamic State and stuff, what happened in Kashmir. So people think if these numbers increase, this will happen to us also, because it's happened in the past. So I feel if one thing stops, I think this entire little bit of heat going on between communities will die, that is, you don't try to change the dynamics of demographics. Just let it stay this for next 100… अब ये क्या है भाई, डायनामिक्स ऑफ डेमोग्राफिक्स, व्हाट इज दिस? आई डिडंट गेट इट. मतलब क्या बोलना क्या चाहते हो सर जी, इसका माने क्या हुआ? तो अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे थे रिलीजियस टॉपिक्स में ही,
लेकिन हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि रिलीजियस एक मिथ है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रिलीजियस बोलते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बस हम लोग के माइंड में वो सब चीज़ें, इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में सिर्फ 2 तरह का इंसान है, सिर्फ 2 तरह का। ठीक है, आप उसको कुछ कहीं से भी डिफिनेशन करें, कुछ भी करें, सिर्फ 2 तरह का आदमी है। एक जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और दूसरा जो सॉल्व करता है। ये हम लोगों ने बहुत अंदर झांक के देखने के बाद ये कंक्लूजन में आए कि सिर्फ 2 तरह का इंसान है, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, अच्छा बुरा। ठीक है, हेल्प करने वाला, दुख देने वाला, सिर्फ 2 टाइप का है, बस यही है। हाँ, तो सिर्फ 2 पैरामीटर है पूरे वर्ल्ड में, और इसको हम लोग एक्चुअली और भी बोल सकते हैं। एक्चुअली अच्छा बुरा भी एग्जिस्ट नहीं करता हम लोग अगर ज़्यादा डीपर जाए, लेकिन सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। ज़्यादा डीपर जाए तो सिर्फ 2 तरफ का लाइफ एग्जिस्ट करता है इस प्लानेट में, एक प्लेजेंट और दूसरा अनप्लेजेंट। कहने का मतलब एक खुश वाला और एक दुख वाला। जो खुश वाला, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आदमी खुशी खुशी जा रहा है, उसको धक्का लग गया, वो आपको मारेगा? कोई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, चलो बोल के निकल जाएगा। मान लीजिए वही आदमी से धक्का लगा तो बहुत गुस्से में, भड़ास में, धक्का लगा, साले मैं तेरे को दिखा दूँ। तो 2 टाइप के आदमी ही एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ये नेसेसरी नहीं कि वो 2 क्वालिटीज़ सेम आदमी में अलग अलग टाइम में हो सकता है, समझ गए ना? तो ये 2 क्वालिटीज़ ही एक्चुअली प्रोपेल करते हैं। अब इसको इन्हेंस हम कर सकते हैं किसी आइडेंटिटी से, ये बात है, लेकिन बेसिकली 2 क्वालिटी है। तो उसी मिथ को हम लोग बस्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे। और दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं और डीपर लेवल अंडरस्टैंड करते हैं गुरुजी क्या बोलते हैं। अभी फिलहाल डर्मोग्राफिक्स चेंज करने का मतलब ये हो रहा है कि देखिए, मान लीजिए एक बच्चे के पास टेडी बियर है, ठीक है, वो हर दिन टेडी बियर से खेलता है, उसको परफ्यूम लगाता है, ठीक है, और उसको वो समझ लीजिए कि पूजा ही करता है बच्चा, क्योंकि उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप बाहर से आ रहे हैं, उसका टेडी बियर खींच के ले जा रहे हैं, आप गुस्सा नहीं होंगे? बात समझ रहे हैं ना? आदमी को पीसफुल होने के लिए, कुछ क्षण तक पीसफुल होने के लिए, उन लोगों को ये गॉड एक डिवाइस के रूप में लेके ये लोग सपोर्ट लेते हैं, समझ लें। मान लीजिए अगर मान लीजिए हम एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। हर संडे को मैं जाता था, क्योंकि मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, ठीक है। मेरे घर में 3-4 फैमिली है। मेरा मम्मी जो है क्रिश्चियन है, मैं भी क्रिश्चियन हो गया था। तो क्या हुआ कि हर संडे मुझे जाना पड़ता था, ठीक है, प्रे करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो संडे के लिए मेरा बेसिकली प्रिपरेशन रहता है कि चर्च में जाके एकदम पीसफुल होके आते थे, क्योंकि कुछ साल से वो एक काम भी करता था, क्योंकि आप जा रहे हैं, प्रे कर रहे हैं और अपने लाइक आदमी से मिल रहे हैं और सब लोग ये कर रहे हैं, हाँ ऐसा वैसा, सहानुभूति कंसोलेशन का ज़्यादा बात होता है वहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं होता उसका पता नहीं, लेकिन कुछ हद तक आपको शांति मिलता है, ठीक है। अगर कोई मुझे आगे बोल दे कि नहीं तुमको ये सब नहीं करना है, बदल जाओ, दूसरे धर्म में चला जाओ, ये करो, अरे मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, अच्छा मिल रहा है, तुम क्यों मुझे बिगाड़ने जा रहे हो? जैसे ये मेरा टेडी बियर है, समझ गए ना, जो मुझे कुछ क्षण तक पीस देता है, और ये लोग आके बोल रहे हैं इसी को। तो डर इस चीज़ का है कि वो पीस का गायब ना हो जाए, बात समझ रहे हैं ना? डर इस चीज़ का। और ये आदमी इससे लेता है, वो आदमी उससे लेता है। हर आदमी को थोड़ा सा मेंटल पीस और मेंटल कंसोलेशन के लिए ही है, ठीक है, सब लोग। और उन लोगों को ये डर है कि ये लोग टेडी बियर छीन के ले जाएगा, तो इसी डर की वजह से ये एग्रावेशन होता है, समझ गए ना? जब आदमी लोगों को ये पता चल जाएगा कि
मैं टेडी बियर बिना तो आराम से जी सकता हूँ। क्योंकि देखिए, अब देखिए ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मान लीजिए एक लड़का था, बहुत ही विश्वास करता था, हर दिन मत्था टेकता था, ये कहता था क्लास 10 पास करने के लिए, ठीक है, दिन रात मत्था टेकता था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, फेल हो गया। उसने सोचा कि नहीं, भगवान का कुछ इच्छा होगा। उसके बाद फिर से कोशिश किया, उसने बहुत बार मत्था टेका, बहुत ये किया, पैसा दिया, खाना खिलाया सबको, इस बार और कम मार्क्स आ गए। तो अभी देख रहे हैं ना, बहुत सारे आदमी लोगों को ये रियलाइज़ होता जा रहा है कि भाई ये तो काम नहीं कर रहा है। कितना कुछ कर लिए, बहुत बार ट्राई भी किए, किसी किसी को बोलते कि हर सक्सेस मिल गया। अभी मेरी एक आंटी है, मैं उनको बात कर रहा हूँ, बेचारे को बहुत दुख है, बहुत दुख। मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत दुख है, ठीक है। तो सुपरफिशियली बोलती है कि उनको भरोसा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी टूट गया है। क्यों? क्योंकि जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है जिस तरह से सोचे थे। मैं सोचा इसमें आके बिलीव करके मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन प्रॉब्लम मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो क्या होता है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है कि भगवान तो है नहीं, एग्जिस्ट करता नहीं है। तो उन लोगों का सबसे बेटर सोल्यूशन क्या होता है कि बाहर में। तो गुरु जी यही बोलते हैं, द वन हु इज़ गोइंग टू द टेम्पल एंड वन हु इज़ गोइंग टू द बार आर सीकिंग द सेम थिंग, ठीक है, वो अलग अलग। मोस्ट ऑफ द टाइम इट सीम्स दैट द वन हु कम्स आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इज़ मोर सेटिस्फाइड। जो रेस्टोरेंट से आ रहा है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड लगता है जो मंदिर से आ रहा है, क्योंकि मंदिर से चप्पल भी गायब हो जाता है कभी कभी, है ना। तो ये सब चीज़ है। Without anybody trying to अब ये टर्मोग्राफिक्स का पॉइंट ही ये हम लोग समझा रहे थे कि मान लीजिए मैं एक माइनॉरिटी हूँ। अब मुझे अगर डर लग रहा है कोई मेरा जो आदमी लोगों को चेंज कर देगा, तो उस डर की वजह से वो तो फाइट करेगा। समझ गए ना? सब लोग अपना टेडी बियर बचाना चाहता है, बात समझ रहे ना। तो वो इस टेडी बियर को, तो अगर आप उसके टेडी बियर के साथ छेड़छाड़ ना करें ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इंडिया में हम लोग, मैं बोल रहा हूँ, मेरे घर में मेरे दादाजी कम्युनिस्ट, मेरे पिताजी हिंदू, मेरे मम्मी क्रिश्चियन, ठीक है। अब समझ रहे हैं मैं क्यों क्रिश्चियन बना, क्योंकि कुछ हद तक मेरे पिताजी कभी नहीं प्रोपेल किया। मेरे पिताजी हर समय बाइबल क्लास भी करते थे, चर्च में भी जाते थे, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। मैं अभी रियलाइज, मैं पहले तो उन लोगों की बातों में आई, लेकिन जब मुझे अपना होश आया, अपना ज्ञान आया, तब मैंने देखा कि भाई पिताजी बहुत एडवांस थे भाई, वो सबको एक्सेप्ट करके चल रहे थे। तो यही है एक्चुअली, ये हो गया हम लोग जो कैटेगरी में बोल रहे, ये हिंदू नहीं है, ये अच्छा आदमी है। कहने का मतलब समझ लीजिए, अच्छा आदमी का मतलब ये है कि ये वो है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है। हम लोग को बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हम लोग को किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करने में नहीं जाना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जाना है। ये सबसे बड़ा ज्ञान मुझे गुरु से मिला, जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि भाई डोंट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और सब लोगों को यही करना है। अगर हम लोग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं हुए ना, तो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन तो होंगे ही होंगे है ना। तो यही चीज़ है कि हम लोग को बियर नहीं छीनना। हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि कहीं हम लोग बियर छीन के ना ले जाए, ठीक है। कोई इस तरह का इम्पोजिशन नहीं होने से ना, सब लोग नॉर्मली बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। increase numbers, you will see everything will level out. This is the only fear. That's why there is reaction. What religion are you? What religion are you? I never identified with myself with any religion as such, because we think must that's understand this, religion is a very foreign thing to India. Because when you say if you have to belong to a certain religion, you have to believe something. But this has always been a land of seekers. We never ever believed anything. It doesn't matter, even when the so-called divine entities came, when Shiva came, his wife asked a million questions. The Shiva Sutra is full of questioning. And if Krishna comes, this man, his disciple, supposed to be asked 1,000 questions. Whoever came, no entity, however divine they were considered to be, could give us a commandment. Only debate he got. Right. Because there was no such idea as the God in our minds ever. Right. So there is no belief system. So how can you say there is a religion? So
great that you're not a God man and you don't have a religion. I think that's a huge, God bless you actually for that. No, this. I was very serious, sorry. No. I'm going to ask you a slightly sensitive question. Germany is wonderful today, but it has gone through its period. Sadhguru, you speak so logically and it makes sense to me. But at the same time, you're celebrating the religious festival of Mahashivratri in a grand way at the Isha Yoga Center. For a young person like me, these religious festivals seem like outdated rituals. So I want to know, what is the relevance of Mahashivratri to the youth? Thank you. अब देखिए, अभी तो सर ने कहा कि आप रिलीजियस है ही नहीं, किसी रिलीजियस को बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये महाशिवरात्रि मनाने का क्या पॉइंट बन रहा है ना? ये दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि आप में सब कन्फ्यूजन होता है, भाई अभी रिलीजियस बोल नहीं रहे, अभी शिव जी का पूजा कर रहे हो, ये पूजा कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये क्या क्रक्स है भाई? इसको आप क्लियर कर दीजिए सर। आपने बताया कोई रिलीजियस नहीं, हमने मान लिया, अब आके बोल रहे हो कि अभी महाशिवरात्रि मनाना है। तो ये लड़का यही पूछ रहा है कि आप महाशिवरात्रि क्यों मना रहे हैं सर जी, जब आप कोई रिलीजियस को प्रिस्क्राइब ही नहीं करते हैं। मैं तो आपका फ़ैन हो गया था ये बात सुन के, आप कोई रिलीजियस को ही प्रिस्क्राइब नहीं करते, इंडिया में कोई रिलीजियस है ही नहीं। तो एक्चुअली स्पीकिंग इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ सीकर। सीकर का मतलब ये हो गया कि हम लोग मानने के लिए ये तैयार नहीं है कि भगवान क्या है, ठीक है? आप अगर आपको बोले कि ये भगवान है, ऐसा है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ज़्यादातर आप देखते हैं ना क्या होता है, बोलते हैं वहाँ पर हीरा मिल रहा है भाई, चलो इस रूट से, वो लोग भाई हीरा मिलता है तू जाके ले ले। हम लोग आदमी लोग ऐसा हैं, सोच, ठीक है? हम लोग को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं भाई, खुद से जाके देखेंगे अंदर में, तो हम लोग मानने के लिए ये तैयार नहीं है कि हाँ यही भगवान, इसी को मानो। हम लोग को मानने के तैयार नहीं थे। आजकल क्या हुआ, शॉर्टकट लगाना है, इसीलिए मानने के लिए तैयार हो जा रहे सब लोग, तो वो बन जाता है रिलीजियस, क्योंकि वो एक बिलीफ सिस्टम हो जाता है, समझ के ना? लेकिन आप जिस दिन मानने को ये तैयार हो जाए कि मुझे भगवान के बारे में पता नहीं क्या है, जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा, है ना? नहीं, विश्वास कर लो, बिल्कुल भी विश्वास करो। तो इंडिया में ऐसा नहीं था। गुरुजी का कहने का मतलब ये है कि इंडिया इज़ अ सीकर का मतलब ये होगा हम लोग साइंटिफिक इन द सेंस हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सच में क्या है, ठीक है? किसी के बताए हुए बात में सुन के, क्योंकि हर लोग कुछ भी बोलता है वो अपने पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, तो मेरे लिए वो ट्रू है कि नहीं, ठीक है? तो इसीलिए गुरुजी ने कहा कि मैं कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ता भी नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि ये लोग क्लटर कर देता है ये सब चीज़। मैं बाद में उसको मिक्स करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं इसका आंसर क्या हो रहा है। आपका महाशिवरात्रि क्यों मना रहे हैं? What kind of festival would you like, first of all? Maybe only the Valentine's Day or something? ये तब हुआ था जब हीटेड डिबेट हो चुका था, बात समझ रहे ना? हीटेड डिबेट हो चुका था, वो लड़के ने बहुत बुरी तरह से क्वेश्चन पूछा था, हम दूसरे वीडियो में हम लोग देखा था, है ना? हीटेड डिबेट होने के बाद अब देखिए गुरुजी के चेहरे में, ये आपको नोट करना ज़रूरी है, हर पॉइंट को नोट करना ज़रूरी है भाई साहब। और अगर आप ठीक से नोट करेंगे ना, आप यहीं पर एक्सटेंडिव हो जाएंगे, मैं बोलता हूँ। क्योंकि देखिए अभी इतना बुरी तरह से इंसल्टिंग वे से डिबेट हुआ, ठीक है? लेकिन गुरुजी का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी मेमोरी में है ही नहीं उनका, कुछ वो कुछ लेते ही नहीं। That is also religious, it's Saint Valentine, all right? So what is Mahashivratri? You need to understand this. There are certain… in India, there are 365 festivals in a year. Yes. Today, due to economic reasons and the way we have structured our work and things, a whole lot of them have died, still about 30 to 35 are being actively, maybe more than that, about 50 to 60 festivals are being celebrated by different people, but that number also is decreasing. Largely maybe about 5 or 6 are being celebrated in a big way. So, some of them are social, a few of them may be religious, but hardly any religious ones. Some are all connected to the calendar. Almost every Indian festival is connected to the calendar. What's happening in the solar system,
We want to do something which is conducive for what's happening that day in the rest of the solar system. Why this is important is because what you call as my body right now, what is human mechanism, has come out of this planet. Most people don't get it till you bury them. They think they came from somewhere. No, this body is… solar system is working like a potter's wheel to generate this. So everything that happens to the solar system happens to you in some way. So there is a very keen observation of what is happening in the solar system today. Accordingly, we have crafted one kind of celebration and we do those specific things. So on Mahashivratri night, to cut it short, because this is an elaborate subject what you opened up, on that day, which doesn't fall on the same calendar, the regular modern calendar date, this time is on 4th of March. On that day, there is a natural… because, planet is not spinning like this, it is spinning a certain way and there's a precision to the planet. You know what's a precision? Hello? Not precision in terms of exactness, I'm talking about what is precision in terms of the planet. The planet's axis is not simply rotating like this, it is going like this. It is a wobble, there is a wobble to the planet always. Because of that wobble, it creates a certain kind of situation on the planet. So on that day, especially in the northern hemisphere or only in the northern hemisphere, there is a natural upsurge of energy. There's a natural upsurge, oh, all this energy I don't believe, you don't. Just go sit on the coast. If there is a full moon night, is the ocean rising? आपको मैं बता दे रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, झूठ क्यों बोलूँगा। हम लोग कैलेंडर वगैरह कुछ नहीं देखना पड़ता है। एकादशी के टाइम में ऑटोमेटिकली आपको भूख नहीं लगता है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, 100% बात बता रहा हूँ। और जब फुल मून होता है ना, अब जो 3 दिन आगे था, पता है आपको, इस दिन आप ऐसे ही बैठे ना, मेडिटेशन बूम से होता है। इतना एनर्जी का अपसर्ज रहता है, जो मेडिटेटर है वही जानता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि सोमा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सही में इंटॉक्सिकेटिंग है। अब जो एक्सपीरियंस नहीं किया उसके लिए क्या, बाबा जी का ठुल्लू है ना, वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग रिलीजियस एंगल इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि शिव जी का पूजा हो रहा है तो वो हिंदू है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शिव जी का माने या फिर आदि योगी का माने हम लोग जो बोल रहे हैं, वो उनको हम लोग सिर्फ ज्योमेट्री के हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो जब पहाड़ में 6 महीने के लिए बैठ गए, सिर्फ 7 आदमी वहाँ पर रुके, बाकी सब चले गए, बोरिंग लग गया। कोई आपको 1 घंटा 2 घंटा आराम से बैठ जा रहा बिना हिले हुए, वो आपको महान नहीं लग रहा है? 6 महीना बैठ गए, ये 7 आदमी ने सिर्फ रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, कुछ तो खपला हो रहा है, कुछ तो गड़बड़। एससीपी प्रद्युमन साहब, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब कैसे एक आदमी अपने बॉडी से जीवित तो है वहाँ पर आदमी, लेकिन वो बॉडी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। क्योंकि देख, बॉडी को एक्सपीरियंस करने का मतलब ये होता है, भूख लगेगा, टॉयलेट आएगा, पेशाब आएगा, प्यास लगेगा, है ना। तो आप कैसे बॉडी से डिस्टेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही वो मून उनके सर में नहीं लगा हुआ है एज अ क्या बोलते हैं उसको, एक एज अ वो माने ऐसे डिपिक्ट इसलिए किया गया है मून को क्योंकि प्लानेटरी चेंजेस हम लोग के शरीर में डेफिनेटली हो रहा है। अब हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं योगा, हम लोग को तो 100% पता है। अब बाहर के आदमी को कन्विंस करना मुश्किल है कि क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में नहीं ना ये चीज़, तो वो लोग डिस्कार्ड करते हैं। बेवकूफ़ी वाला बात करते हो तुम, कुछ जानते हो साइंस का? मतलब ये सब व्हाट्सएप साइंटिस्ट है सबकी। अब डिस्कार्ड हम लोग क्यों इस तरह से रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं? क्योंकि भाई इस चीज़ को इग्नोर मत करो।
जिस दिन आप फुल मून डे में बैठ के एक बार मेडिटेशन करना सीख जाओगे ना, उस दिन आप बोलोगे सर कितना बड़ा सागर था और मुझे 2 बूंद दे के जीवित रखे हो आप। यही बात है। तो आप कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करे। वो लोग रिलीजियस नाम देगा, ये देगा, वो देगा, टैग लेकर, ये सब सिर्फ बहाना है, ठीक है। मेन बात ये है कि प्लानिटरी चेंज ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी का अपसर्ज हो रहा है और जिसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं फॉर बिकमिंग मोर कॉन्शियस। एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। हम लोग एक गाड़ी 4 चक्के पर चलते हैं, एक बॉडी, माइंड, एनर्जी, ठीक है, और डिवोशन, ये 4 चक्का है। अब बॉडी जो है वो कर्मा योगा बोलते हैं ना, भक्ति योगा डिवोशन को, एनर्जी जो होते क्रिया योगा बोलते हैं, है ना। तो माइंड का जो है नागा योगा, ठीक है, जो माइंड को साफ करता है। तो ये 4 गाड़ी में हम लोग का चलता है, ठीक है। तो एनर्जी अगर वीक हो गया ना तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर अगर आपने 3 को बैलेंस किया है, एनर्जी भी ऊपर आ जाए ना, तो आपको इनलाइटन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यही कहने का मतलब हम लोग को तो देखना है, हम लोग को पता नहीं, बस हम लोग को देखना आगे क्या होता है। हम लोग को जो समझ में आ रहा है वो समझा रहे हैं क्यों इस तरह से ये सब चीज़ें। हेलो, सो न्यू मून डे, फुल मून। अब देखिए किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा ये चीज़, क्योंकि अब एक्सपीरियंस में जब नहीं होता है तो दूसरा वाला झूठ ही बोल रहा होगा भाई, है ना। बाद में हम लोग प्रसून जोशी के साथ हम लोग करेंगे डिस्कशन। लेकिन Do you see that the very ocean is trying to rise? Well, over 2/3 of your body is water. What makes you think water inside the body won't rise? All the fluids in the body are also rising. So you will see these things are there everywhere. If you have ever been in a mental institution, no, you could have gone there and just followed. You will see on full moon days and new moon days, people take extra care because those who are psychologically disturbed become far more disturbed. People think moon causes madness, that's why lunar and loony and all this stuff. Moon does not cause madness, it just pulls everything up. If you're a little crazy, it makes you more crazy. You're a little loving, it makes you more loving. You're a little meditative, it makes you more meditative. Whatever is your quality gets enhanced because it's there's an upsurge in the system. This particular day, after the solstice happens in December, 22nd of December is the winter solstice. After that, the planetary precession is such that there is a natural upsurge. When I first heard… Very big way. If on that night, if you lie down, this means when the energies are trying to move like this, you're kind of obstructing it. It is not only that you lose the benefit, you could also harm yourself in a very sensitive way. All these things matter to you only when you want to be a full-fledged human being. When I say a full-fledged human being, you want every faculty that can be opened up in the human being, you want it to be opened. Not if you are that kind, by evening you're drunk and sleeping, what is there also you want to kill it, that's up to you. But if you want to be a full-fledged human being, you want to full scale, everything happening to you, you observe all these small changes that happen in the system and take care of that. So you want to sit straight, you want your spine to be erect on that night. When energies are moving upward, you want to help it further go up, not like this. So we created what is called as jagaran, that means to stay alert and to stay erect. How to keep people erect? Just make them sit. You think they will? If I make you sit for another 5-6 hours, you will simply sit? No, I have to entertain you. Hello. So, that night we have a celebration from evening 6 to morning 6, 12. अभी अपलोड करेंगे कैमरा, उसके बाद हम लोग रिएक्शन वीडियोस कैम के साथ देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि आपने पता नहीं क्या देखा इससे, लेकिन मैंने ये देख रहा हूँ कि
हम लोगों के लिए इस उम्र में माने कितना सेक्रीफाइस कोई कर सकता है, अपना जीरो दान सब कुछ तो दे दिया है ना। इंटेंशन क्या है, अगर आप ये देखेंगे ना तो आपके आँख में आंसू आ जाएगा। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यही है कि ये हम लोगों को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, और कोई भी इस चीज़ को देखता ही नहीं। अगर सब लोग इस चीज़ को देखना शुरू कर देगा ना, जिस तरह से मेरे आँख में आंसू आ रहा है उसी तरह से सबके आँख में आंसू आ जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम लोग सब बेटर हो जाए। हम लोग सब दर्द से निकल के चले आए, हम लोगों के पास कोई सफरिंग ना हो, हम लोग अच्छी तरह से जिए। क्या जरूरत था इनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करके यूएस में जाना? ये भी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने घर में बैठ सकते थे खुश। इतना इंसल्टिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को लेकर जाना क्या जरूरत? आप सोचिए, बस एक ही चीज, बस एक ही चीज, आपको दुख दर्द से निकालने के लिए, ठीक है। और ऐसा कोई भी मनुष्य अगर करता है, ऐसा अगर कोई भी मनुष्य करता है, वही भगवान है। भगवान को आप खोजते रह रहे। जो अपने आप को जानता है वही भगवान है, अपना व्यक्तित्व को जानता है वही भगवान है। आप भी रियलाइज कर सकते हैं, मैं भी रियलाइज कर सकता हूँ, सब कोई रियलाइज कर सकता है इस चीज़ को। इसीलिए शक्तिमान में एक डायलॉग दिया गया था, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाए वो शक्तिमान। तो ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। हम लोगों को दूसरों का ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बस यही है इम्पोर्टेंट चीज़। लेट्स नॉट मेक इट सीरियस, क्योंकि गुरु जी कभी सीरियस नहीं होते हैं। 12 hours non-stop, music, dance, meditation, various things being done so that everybody stays alert. Nearly 1 million people are in one place, but these numbers were exploding, so now we have large screens in over 130 cities across the country in southern India, so that people gather there and too many don't come here, but still it'll run into somewhere around 700 to 800,000 people in one place. And over 86 channels are telecasting it live. So how many millions of people are watching, we don't know. Last year they said it could be somewhere around 6 crore people could be watching. This time it's going to be much more. This is also the 25th year of Mahashivratri in Isha. 25 years ago, we started Mahashivratri celebrations in that place with just 70 people. So, it's grown that big because people find the benefit of what it is. You do one thing on that night without getting drunk or drugged, just sit alert. You don't like celebration, so you simply sit like this. It's up to you. So, you need to understand this. A human being needs… Can't go? Do this to clear out… Celebration has to happen in your life. You need some sense of playfulness, otherwise there's no celebration. Most people can celebrate only if you get them drunk. I will show you 1 million people in one place, not a drop of drink allowed anywhere, but you will see full night, not one person will sleep, everybody's on, okay? सब कुछ ट्राई किया है हम लोगों ने, सब कुछ ट्राई किया। जो एनर्जी का ब्लास्ट होता है वो अलग होता है भाई। Wait. पर उसके बाद
Well, let me pose you a question, Sadhguru. So, we can perhaps work as individuals to, now that I know I take away wakefulness and not consciousness, right? To move towards. How big a bubble did you blow? Okay. Well, let me pose you a question, Sadhguru. So, we can perhaps work as individuals to, now that I know I take away wakefulness and not consciousness, right? To move towards consciousness. And that's an individual's decision to maybe train in this particular way. So, is there some way that we can harness these insights like you have, harness this understanding, and use it as anesthesiologists to take care of patients? Because if we can reduce it to, or if we can adapt it, I should say reduce, if we can adapt it in that way, that would be very, very helpful, because we would be using the powers in a way that would control, have to use the word, the brain, in a way that would be perhaps more physiologic. I'm not the expert in the subject, but because you're asking me the question, I'll say something. But you're the expert in anesthesiology, is it? Yeah. I'm sorry. in my simple understanding, anesthesia as a process has come into being in this world, or is existing right now, because there is pain. So I did a little reading about you, and he's not as uneducated as he would have you believe. So he's actually quite educated. That's pretty clear. And I was curious because I think it was back in 1982 when you had like your first enlightenment experience, I think. And there's a story here. So you mentioned how it seemed like only 10 or 15 minutes had gone by. But what had happened is that you'd been out in this state for like maybe 4 hours or so when you actually… Let's look at another moment. Smaranam karunam kalavashadiha sakalam karunam samayadipate akilam karunam. Good evening everyone. Sadhguru, can you tell us a little bit about that chant and what it means? Well, I'm just not going by the word meaning, but the overall meaning would be, birth is a certain pleasure and joy, but death is compassion. When you have lived enough, the relief of death is fantastic. The worst thing that could happen to you is that suppose you have to live forever. And what we are calling as birth and death is just a certain amount of time and a certain amount of energy in play. Time-wise, no matter who you are, what you are, you can do about it. You can't hold back a day. You can't hold back a minute. But our life energies are in our hands.